Hello everyone. Good evening everyone. So, can I get a confirmation if I'm audible or not, as well as visible properly? Just write down yes in the chat box. Hello Pawan, hi. Hello, hello Nishit, hi. Good evening Pawan. Good evening. Thank you, Shubhashish. Okay. So, are you guys excited for today's session? How excited are you guys? Hello Amit Kumar, hi. Okay. So, have you guys registered in Geek Olympics? Good enough. So, in the middle of the session, I'll be discussing an interesting thing. So, stay tuned till the end of the session. And what about today's live session? So, what guys, what kind of questions do you have for the live session? Basically, first of all, I would like to know about the audience. Like, are you a fresher or a college going student or working professional? So, basically, write down what currently you are looking for. Like, what is your profession or what are you studying right now? Okay, I can see Amarnath is excited. Okay, very jada. Okay. Okay, so we got an answer. Amit Kumar is from third year. Okay, fresher. Okay, Shubhashish is a fresher. Okay, okay, we have a final year student, Pawan Kumar. Okay, great. Second year experience, CSE student, final year. So basically, I guess everyone is like either inclined, like is from college last year or basically a fresher, right? Okay. Okay, so fresher with primary language CPP and looking to switch on Java. Okay, so Java is a very good programming language. So basically, first of all, let me introduce myself. So hello everyone, my name is Jadil Sanya, and I'm delighted to have this like opportunity to introduce myself in front of you guys. Okay, so currently I'm working as a mentor at Geeks, and where I have the privilege of training numerous of students in the field of computer science. Basically, I teach data structures and algorithms over there. Okay, so that was a short introduction about myself. Okay, so without any delay, let's discuss what we currently are going to do in this session. Okay, so like from the title, I guess everyone might have understood, right? So basically, we'll be having a discussion of what Java backend development is like. This session is going to be about cracking the coding interviews as well as knowing how to follow the path of being a Java backend developer. Okay, so we will be having our guest over here, and so before we start the session, Geeks for Geeks has come up with an exciting event that is full of activities, challenges, offers, and fun. So basically, in the middle of the session, I'll be sharing you the details about it, or let's say anytime during the session. So stay tuned till the end, and you must get that information. I really want you guys to know about it. Okay, so and as well as regarding the session part, I'll be taking a Q&A session as well at the end of the session. You can post down all your doubts, and in the middle of the session as well, if you have any kind of doubts like, sir, what to do about this part, I am having difficulty in this area, you can post down everything in the chat box, and our mentor will be more than happy. So today in this session, like before moving towards the other part, is this clear to everyone? Yes or no? Any doubts regarding any part of the session or anything? Just write down yes or no. If any doubt, then just post it, or let's continue with this session. Okay. I guess no, nothing, everything was clear from my end, right? So today we have a very special guest, Pranav Miglani, and who is a VP at JP Morgan Chase. Okay. He'll be taking your session and he'll be discussing his journey or everything about Java backend development and how you can pursue that path. Okay. Okay, I got replies. Okay, it was clear to everyone. So let's welcome uh, Pranav Miglani. Hi everyone, I hope I'm Pranav. audible. Yes, Pranav, you're audible.
Cool, 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 cool. Hi, thanks Jay for the brief introduction. To the audience present here, just give a quick shout out as to most of you are freshers or anyone experienced down there. कोई भी experience या किस type का generally इस समय crowd है? Anything? College student. Okay, so we got replies. Basically, fresher. We are getting a lot of replies as they are freshers. Okay. Cool, cool, cool. चलो फिर in depth नहीं जाएंगे सर, brief में cover up करेंगे. Just to give a brief about everyone, hi, I'm Pranav. I have been associated with Geeks for Geeks with quite some time now. I have a strong track record of successfully launching and integrating products. Notably, currently I'm working at JP Morgan Chase, where I have led credit card launch into the UK market, and we have successfully acquired more than 1 million customers. I majorly take care of the notification point of view, wherein किसी को भी message जाता है कि hey, this much amount has been deducted in ये सब, as well as the statements, basically जो भी end of the month आपकी monthly statement generate हो रही है वो सब. Prior to this, I worked with Paytm, wherein I launched various accounting products, which led to overall collection of more than 15 billion rupees in just 6 months of its launch. Uh, Collaborated on onboarding engine, wherein 21 million plus merchants have been onboarded, 100 million plus KYCs have been done, and a lot more. My technical expertise is majorly into Java, Spring Boot, uh, async use के लिए I have worked with Google PubSub, Kafka और AWS specific भी हैं. But yes, caching के लिए Redis Aerospike, database depend upon use case to use case, be it SQL and NoSQL, as in what general things are as per the microservice जो भी हम design कर रहे हैं. Towards Java backend technologies, I'd say they play a crucial role in interviews and career growth. You can see a lot of job opportunities down there in terms of Java. There have been a lot scope wherein majorly big banks, जो भी सारे हैं, majorly built on the JavaScape. Now, there are new technologies which are coming up, but yes, Java still lags far ahead of the competitors. Yes, exactly. So like earlier, like during the generation in which we didn't have like Android phones over there at that time, Java was used for like creating apps, and like from back then it is being so much into discussion. Yes, quite correct, Jay. So overall, for if I'd say in terms of proficiency, there are various frameworks. Majority 70 to 80% of the market is catered by Spring Boot. पहले Spring था, Spring Boot. Then depending upon ORM, again, use case to use case specific, Hibernate hai ORM, which has a lot of attention attracted towards it. There is a Juke, which also has a lot of attention attracted towards it, because दोनों का थोड़ा बहुत context different है, but yeah, most of the things are same, because basically हर चीज के लिए CRUD चलता है, which is create, read, update and delete. So you create an instance of anything, update that instance, push into the database, then uh, read and delete. There are two other options left. Yes. Major, yes. Majorly there are everything is based upon REST APIs हो गए, अगर basically sync calls हैं. Async calls के लिए we can communicate over WebSockets, या फिर we go via Kafka route if it's service to service, and if it's front client to, you can say, our own service, then we go for a WebSockets and other things route. Or given that ever increasing demand for the Java backend developers, I see a lot of folks there in Uber, be it any farm company you think of. Microsoft has its majorly into C Sharp, but yes, uska bhi majorly class and other structured you can think of is based similar to that of Java is. So having Mhm. proficiency in Java and being a backend developer, mastering these, you can say, technologies do provide a competitive edge and pave a way for very successful career in software development. Or to promote our GBDL course, there are a lot of mentors which give this entire course. Not only me, there are other from various successful startups and even farm companies. Feel free to join, and they do share that link, please. Okay, yeah, I have shared the link of that course in the chat box as well. So
you can explore this link. Till then, like I had a question, Pranav. Like I have heard about a thing like back then ki Java is free right now, and in future it might happen that we need to like purchase Java language. It will be not free of cost. Is it so? And it's not entirely true. Java is open source. So Mm-hmm. Oracle का है वो paid है, those who want to go for that, but OpenJDK है, you can install, and other development kits are totally available. So हर चीज़ का paid version भी आता है, free version भी आता है, and everything is supported by those free. So everything is open source nowadays. People use open source technologies. So yes, उस चीज़ के लिए कभी भी टेंशन नहीं लेते. Okay. Okay. So, Majorly into mhm. security and other stuff, definitely we go for enterprise version. We might end up paying some bucks because वो security है. Rest other things assured, we go for open source and not legacy. Okay. So like regarding the backend course, I've shared the link. You guys can open the link. It is in the in the chat box. I've shared it with you guys. So just give me a minute. I'll be sharing my screen and I'll be quickly going through what that course looks like. Okay. Meanwhile, किसी के कोई भी doubts है, just ping in the chat down. Maybe I'd answer them right now or towards the end of the conversation. So yes, not an issue. Feel free to drop any doubts that you have. So basically, this is the Java Backend Development live course in which industry experts or mentors they will be giving you the what actual view in industry it is, right? Basically, if you go to industry and if you are going to work in backend development, right, and especially with Java, so what all topics are required, how to like study each and every topic, and you will be able to get reviews from basically top mentors and industry experts. You can explore this page. It is pretty much like descriptive. You will be able to see what all topics, course content, everything will be visible over here. Okay, so that was Just all let's about. scroll towards the week one. I had a doubt. Someone posted Amit posted what will be the roadmap for Java backend developers for freshers. So you can just think for freshers, we majorly Geeks for Geeks just focus. Sir Spring Boot. I'll address towards the later end of the remaining course doubts. But yeah, एक start करते हैं. So yes, for if you can see generally Java के OOPS basic principles which are basically important whenever you think for a अगर एक्सपीरियंस 2 years या 3 years पे जाते तो लो लेवल डिजाइन एंड हाई लेवल डिजाइन के लिए आपको लो लेवल आना चाहिए. लो लेवल में आपके बेसिकली ऊप्स कंसेप्ट ही सारे क्लियर होते हैं. तो बी इट थिंग लाइक डिजाइन, व्हाट आई हैव जनरली आस्क्ड द डिजाइनर, एलिवेटर सिस्टम, जो आपका लूडो डिजाइन लूडो, देयर आर वेरियस डिफरेंट गेम्स वी कैन आस्क फ्रॉम लो लेवल डिजाइन. सो यस, एक्सपीरियंस के लिए हम वो जनरली पूछते हैं, बट दोज आर टोटली बेस्ड अपॉन जावा ऊप्स प्रिंसिपल, हाउ मच knowledgeable the front person is, if he's able to go into depth of thinking around not only the question but solution में किस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं, how much that solution is extendable. पार्किंग लॉट का बहुत कॉमन एग्जांपल है एंड इट्स वाइडली यूज्ड टुवर्ड्स इंडस्ट्री. एंड वो सारा आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर इंटायरली बेस्ड होता है. इट्स नॉट अराउंड नोइंग अबाउट अदर थिंग्स, बट यस. फिर आपका थोड़ा बहुत मल्टी थ्रेडिंग एंड हैश मैप आता है. मल्टी थ्रेडिंग अगर आप सोचते हो कि इट्स बेस्ड अपॉन अ सिंगल इंस्टेंस, whereas in whenever you'll go towards production based you can say systems where they are multi-threading कुछ बचता नहीं है, because there are even if in terms of locks जो आप सोचते हो, it's not only on single instance but multiple instances चल रहे होते हैं उनके अराउंड आप locks और concurrency वगैरह सोचते हो. So if I'd say for a fresher, you can just think of the basic principles like multi-threading, hash map, how does hash map का resize पे क्या effect होता है, and वो सब. These things are already covered within these course content, but yes, आपको YouTube अदर पे भी आपको वेरियस डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी. बट yes, अगर आपको कंसाइज चाहिए तो दिस इज द फॉर्मेट दैट Geeks for Geeks has come up, not only getting feedback from us as mentors but a lot of feedback from the community too. Yes. So like that was it all about the backend development course, and now, okay, just a minute. Yeah. So we'll be getting on with the session. So yes, I believe so. Even if we start with the session, I'd say introduction to Java backend development would be the kind of it everyone is looking for, because everyone's is fresher. Had it had been experience, thoda sa crowd hota, I would have gone for a different set of things as to experience में थोड़ा सा in depth हो जाता है, but freshers के लिए generally basic or you can say base is what
everyone looks for. So Hmm. yes, Java backend development involves creating server-side logic for web applications using Java as a basic programming language. It's a critical aspect of web development as it handles processing हो गया, आपका storage हो गया, जो database से हम retrieve कर रहे हैं, as well as communication between server and client side components. And since I already mentioned around the key components, so I'll just brief up key components कौन से हम use करते हैं generally. You can say frameworks like Spring हो गया, Spring Boot हो गया, Hibernate, general open source technologies जो कि आपकी Apache की होगी, Apache Commons, Jackson, other things wherein database जो भी हम touch कर रहे हैं, MySQL, Postgres. If we go for a SQL kind of a structure, NoSQL होगा तो आपका Mongo हो गया. इवन रेडिस इज ऑल्सो की वैल्यू पेयर, तो आप उसको नो सीक्वल की तरह ट्रीट कर सकते हो. बट येस, टोटली डिपेंड्स अपॉन यूज केस टू यूज केस, आपको चाहिए किस लिए कौन सा डेटा सोर्स, यू प्लग इट देयर and based upon the kind of niche that you're looking for, you get easily things done with the kind of data source that are readily available. So coming back again, Java is majorly used for the backend because of its, I'd say, scalability, platform independence, large, you can say, extensive community, जो कि initially new built languages के लिए कम होती है. That's why Java has a big go ahead with kind of extensive community support that has been provided. Moreover, it can handle hard, you can say, very high TPS or traffic or volumes, you can say, large data sets, which makes it kind of suitable for enterprise level applications. So yes, Java's platform independence allows applications to run on various, you can say, operating system, reducing deployment, maintenance, complexities, और भी जो कि problems होती हैं, vastly gets reduced if you use Java as a backend. Hmm. And I'd say overall, Java backend development has been a powerful and reliable solution. Moreover, in terms of market too, if you see Uber, Paytm, other, you can say, startups, Meesho, there are a lot many startups which I keep on, which I would start तो पूरा चीज खत्म उन्हीं के नाम पे ही हो जाएगा. So बस yes, majorly are into, you can say, have solutions built on Java. But it's not only that कि Java पे ही है, but yeah, Spring, sorry, my bad, Node and other भी हैं frameworks, but वो use case to use case, but majorly Java आपको हर जगह दिख ही जाएगा, no doubt about that. अब इसमें हम आगे आए तो फिर जावा बैकएंड के फ्रेमवर्क्स के ऊपर हो सकता है कि देयर आर लॉट ऑफ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग बूट, स्ट्रट्स. सो newer, you can say, web applications are built on Spring Boot as a framework. जो old applications थे वो struts and उस पे हैं. But yes, if we consider market share भी अगर हम देखेंगे, Spring Boot का around 70 to 80% है, which is widely adaptable, you can easily say. And it's a popular framework which simplifies the development of the Java applications. It provides a convention over configuration approach. आप annotation से @autovar करके various, you can say, beans easily inject कर सकते हो. Beans is nothing but, if I'd say, new instances of the same, I'd say, class. You can think like that. But yes, फिर सारा का सारा वैसे singleton based होता है. I won't go into much uh, code level details now because वो सारा boring हो जाएगा. But yes, so these, you can say, are the few of the, I'd say, frameworks which are widely adaptable into our current industry. So yes, now I'll answer some of the questions which are being popped up. So स्प्रिंग बूट सीखने के लिए सर्वलेट और जेएसपी कितना परसेंटेज आना पड़े? इट्स नॉट नेसेसरली कि स्प्रिंग बूट सीखने के लिए आपको सर्वलेट और जेएसपी आना चाहिए. जेएसपी जनरली फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड की रेंडरिंग के लिए अगर आप कर सकते हो तो करना है. बट देर आर वेरियस अदर थिंग्स टू, रिएक्ट में कर दो आप फ्रंट एंड सारा का सारा, तो देर आर वेरियस अदर थिंग्स जेएसपी से आप बाईपास कर सकते हो, नॉट नेसेसरली. बट यस, हाउ इज द कंपाइलेशन प्रोसेस, ये तो ज़्यादा डेप्थ में जावा के हो जाएगा. So what I've seen that new startup mostly use JavaScript as a backend, but legacies use Java. Why is that so? See, that depends upon use case to use case. अगर आपका ट्रैफिक ही इतना नहीं है, न्यू स्टार्टअप है, ट्रैफिक इतना नहीं है, उधर I'd say so स्टार्टअप में थोड़ा सा ये बैलेंस हो जाता है कि फ्रंट एंड भी आपका जावास्क्रिप्ट में, बेसिकली रिएक्ट में हो गया, एंगुलर में हो गया, व्यू में हो गया, नेक्स्ट में होगा, किसी भी हो गया, तो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट. बैक एंड भी आपका फिर you need to hire specifically niche people for that. So that's the reason they go in for, let's say कि JavaScript front end पे भी है तो back end पे भी let's go for Node.
बट नोड का बेसिक यूज केस इज मोस्टली इवेंट ड्रिवन, सारा का सारा कॉल बैक स्टैक के ऊपर है, वेयर इज जावा का मेजरली डिपेंड अपॉन द कंटेनर, बट यस यू कैन थिंक ऑफ लाइक थ्रेड्स एंड अदर थिंग्स अप एज ऑफ नाउ. बट एक्सपीरियंस के लिए आई वुड चेंज द आंसर अप, बट फ्रेशर के लिए आई से सो यू कैन थिंक अराउंड थ्रेड्स एंड नाउ एज ऑफ नाउ. So that's the reason startup आपकी जो होंगी to you can say cost efficiency के लिए they can go for JavaScript. But yes, majorly आप standard आप companies देख लो, those who pay highly well also, most of them hire for Java. उसमें कोई दिक्कत नहीं है Java वाले को रोका जा रहा हो, नहीं. Even in this market, people को बहुत ऑफर मिली हैं, be it anywhere, not an issue with that perspective. We use Java as a backend language for web development also. If yes, is it optimal to use? थोड़ा सा ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया. डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमल टू यूज हियर. So depends on use case to use case. Again, if you go for a cost, you can have a different answer. If you go for kind of problem that you are solving, you can have a different answer. डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट चीज़ होती है. इवन इफ आई से कि एक स्टार्टअप के लिए अगर मान उसके पास सारे जावा डेवलपर हैं और वो सारा का सारा बैकएंड अगर जावास्क्रिप्ट में लिखने लग जाएंगे, देयर प्रोडक्ट मार्केट फिट और लॉन्चिंग इनटू द यू कैन से कस्टमर वुड टेक अ लॉट मोर टाइम. सो वहाँ पे आपका टाइम वेस्टेज होगा, आप नहीं ट्राई कर पाओगे. वेरियस फीचर्स जो आपने लॉन्च करेंगे, दे आर रिक्वायर्ड और नॉट, वो चीज़ टेस्टिंग अल्फा बीटा टेस्टिंग कुछ नहीं होगा. सो इज देयर यू तब आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी चाहिए. दैट आल्सो बिकम्स अ क्वेश्चनेबल. सो यस, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है. डिपेंड अपॉन रिसोर्सेज क्या है आपके पास, डिपेंड अपॉन टेक्निकल स्किल्स क्या है आपके पास. आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, नॉट एन इशू विद दैट पर्सपेक्टिव. Okay, और एक क्वेश्चन था. Yes. Can you please tell the scope of Python versus Java for backend? Python versus Java. Python is majorly used for scripting or handling bigger data set because libraries extensively available हैं. So I'd go for Python with that perspective, even though it has its own framework. Symfony हो गया और एक और framework भी है Python का. I'm not able to remember the name as of now. Django. So yes, you can use those frameworks. But yes, overall coming back towards it, scope दोनों का है. But yes, if you say so in terms of technologies and other things up, Python is a new entrant, but उसका overall compile time because of things being loaded, lot of things being loaded takes a lot of time. So over that time processing में Python lags behind towards Java. So अगर आपको उस process से देखना है तो, but getting things easily done with help of Python is very much easier as compared to Java, if I'd say with that perspective. बट मार्केट के रिस्पेक्ट में देर आर ओपनिंग्स फॉर बोथ. जावा आपका हर वाइडली पिक एनी स्टार्टअप और पिक एनी वेल एस्टैब्लिश्ड नेम, वहाँ पे आपको जावा की टीम मिल ही जाएगी. So I got one more question from Harshit. He says, can we start with Spring Boot directly if I know Node.js and Django? या यू कैन स्टार्ट विद स्प्रिंग बूट डायरेक्टली बिकॉज जो भी आपके Node.js और Django है सारे फ्रेमवर्क है विच इज बेसिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर को आपको हैंडल कर रहे हैं. अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर हैं, नो डाउट अबाउट दैट, यू कैन इजीली गो फॉर स्प्रिंग बूट टू, क्योंकि वहाँ पे भी आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर ही है. आप किस बीन को कैसे इंपोर्ट कर रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट. कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गो विद either you can start Spring Boot directly, कोई इशू नहीं है उसमें. बट यस. Okay, so I guess we have taken most of the doubt. One more doubt is there from Nishit. He says, what are the components that are shared between multiple threads? What are the components? क्रिटिकल सेक्शन कह सकते हो एक तरीके से, विच इज बेसिकली एक सिंगल रिसोर्स. आपने इफ यू हैव हर्ड अबाउट द वोलेटाइल एज अ कीवर्ड, so volatile is some sort of variable which is shared across multiple threads. So basically वो एक रजिस्टर पे जो भी आपका allocated है, multiple thread उस same resource को update कर रही होंगे. There are atomic integers जो कि within that same thread में रहेगा, तो you can go for and search for those. But yes, uh, I'd say vaguely is the critical section which is shared between multiple threads. Okay. I got a very one more question. What is Java? ये तो आप आंसर करोगे अब. बताओ व्हाट्स जावा नाउ. जावा एक लैंग्वेज है. इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो देन यू नो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ईगल बाबा. चलो कोई और क्वेश्चन, देन एल्स वील गो ऑन एंड
see around what are the different हमने frameworks cover कर लिए. We'll go around database integration and ORMs and stuff. So अगर कोई question है तो then we'll answer those. Else कोई है और क्वेश्चंस? क्वेश्चन मेरी साइड से था कि मैं मतलब एक Yes. क्वेश्चन आया था कि स्प्रिंग बूट जो भी हमारा जावा बैकएंड डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है वो ज़्यादातर हाई हाई स्केल Hi. सॉरी हाँ क्लियर है मेरी आवाज़ आई गेस Yes, yes, yes. I'm एको हो able रही to. थी हाँ तो मतलब एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि स्प्रिंग बूट जो हमारा जावा बैकएंड डेवलपमेंट का जो भी हम टास्क करते हैं वो इंडस्ट्री सेंट्रिक करते हैं राइट तो हायर स्केल पे हम उसको यूज़ करते हैं कि बहुत सारा डेटा है हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करने के लिए हम वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन करते हैं बट व्हाट अबाउट अगर हमारे पास वो स्किल पे काम करने की मतलब वी डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी राइट करंटली हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो हाउ शुड वी लाइक यूटिलाइज मतलब हाउ टू फाइंड द राइट प्रोजेक्ट सो दैट कि कैसे हम लोग प्रिपेयर कर पाए टू अंडरस्टैंड अबाउट जीबीडीएल बेसिकली सो प्रोजेक्ट्स के लिए आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कुछ भी यूज़ कर लो. अभी के लिए बेसिक बोलूँ तो ई वॉलेट सिस्टम पे अगर आप देखो होता तो हर चीज़ में बेसिकली बोलूँगा तो CRUD ही है, क्रिएटेड अपडेट डिलीट. अब वो कितनी एफिशिएंसी से हो रहा है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यूज केस टू यूज केस. अगर आपके बिलियंस ऑफ इंसर्ट्स हैं देन आप कैसांड्रा यूज करते हो क्योंकि उसमें इट्स मेजरली बिल्ट एज अ डेटा सोर्स फॉर दोज यू कैन से वेयर बिलियंस ऑफ इंसर्ट्स आपको मिली सेकेंड्स में चाहिए. वेराज अगर आप MySQL में सेम चीज काम करोगे दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. एंड इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट यू नीड टू थिंक अराउंड व्हाट क्लियरली आई से आपके बेसिक फंडा अराउंड CRUD होने चाहिए. वेरियस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो आप यूज करना चाहते हो आपको उनके बारे में थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए. एंड प्लग इन प्ले करके you can get much more experience rather than just reading totally theoretical about it. So एक बेसिक सा प्रोजेक्ट वेट ई वॉलेट सिस्टम बना लो जिसमें से एक यूजर से दूसरे यूजर पे ट्रांजैक्ट हो रहा हो. आप कैब मैनेजमेंट पोर्टल बना लो जिसमें आप रन टाइम पे बेस्ड ऑन जीपीएस कोऑर्डिनेट से कैब एलोकेट कर रहे हो. आप पार्किंग लॉट मैनेजमेंट में पूरा डिजाइन कर सकते हो विद द बैकएंड विद द डेटाबेस की आपको मल्टी लेवल पार्किंग एंड मल्टी स्टेट पार्किंग भी आपको ऑफर करना है. So there are various different things, simple projects, say library management, other things are also there. But things about what exactly that you want to build for and how much is the traffic that you're thinking about. टिकट मास्टर का आप बैक एंड सोच सकते हो विच इज बेसिकली आप एयरलाइन होटल वीजा टॉप अप इंश्योरेंस ऐसे 21 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें होता कुछ नहीं है. यू हिट अ एग्रीगेटर यू गेट योर रिजल्ट्स. उन सप्लायर से जो रिजल्ट्स आए यू क्लिक अ बुक. वहाँ पे एक हॉल्ट होता है. सो जैसे बुक माई शो पे आप देखते हो मूवीज आप बुक कर रहे हो तो देयर इज अ हॉल्ट वेन एवर यू गो फॉर अ पेमेंट डिटेल्स पेज वो आपका हॉल्ट बोले तो वो विंडो या फिर वो सीट ब्लॉक हो रखी होती है. यू गो बैक अगेन उस चीज पे वो आपको ब्लॉक दिखेगी. आपको 10-10-15 मिनट बाद ट्राई करोगे तो वो सीट अवेलेबल हो जाएगी. उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट ब्लॉक बोलो. बहुत अलग अलग फंडे में सेम चीज को कन्वे कर सकते हैं. देयर इज नॉट एन इशू बट यस थिंक अबाउट लॉजिकल सिस्टम जो कि एग्जिस्टिंग है विच इज बेसिकली एनीथिंग. आप उसके अराउंड प्रोजेक्ट बिल्ड कर लो. कोई ज्यादा चीज नहीं है. नथिंग इन टर्म्स ऑफ वो इनिशियली फॉर अ फ्रेशर आइड से कि ट्रैफिक ज्यादा होगा नहीं. यू कैन गो इन फॉर स्मॉलर traffic or you can go for a MySQL and other stuff up. But for an experience I'd say so कि हाँ कितने ट्रैफिक के लिए क्या बिल्ट अप कर रहे हो that totally depends upon it. Okay. I think sir is in Python car. ना. Actually I do have a flight tomorrow. I'm going back to Bangalore. So yes. So अभी के लिए I've just parked my car here. I'm going back to my home. Then I'll take cab in the morning and probably be in Bangalore tomorrow. So yes. Okay. And again, Kritika doubt है. Please solve my doubt. I'll start from Spring Boot directly or with JSP servlet. You can start from Spring Boot directly. Not an issue with that perspective. Funde clear होने चाहिए. Whatsoever you are trying to build. MVC क्या है? Model View Controller basically. आप क्या मॉडल करना चाहते हो? कैसे व्यू रेंडर हो रहा है? And what are the controllers that you are using for? I think so you would be able to grasp easily with Spring Boot directly. JSP पे जाने की कोई such hardcore and prerequisite knowledge नहीं होनी चाहिए. Okay, I guess Kritika, that was the answer. Like you got it right. So Still, किसी के कोई भी डाउट्स हैं फील फ्री टू पिंग विद इन द चैट. लास्ट में मी और जय वुड यू कैन से एड्रेस दोस बट यस.
Okay. Cool. Then, since we were talking about kya traffic and other things, I'd say database integration and ORM would be the next thing to be talked about. So, database integration is crucial in terms of backend development because it enables the storage, retrieval, modification, or else, in better words, I should say, manipulation of the data. And ORM, which is basically object relational mapping, which is basically in similar terms whatsoever the kind of object that you have in the database, similar आपका Java में object बन जाए. So which is basically into Hibernate is majorly being used as an ORM. Juke is also being used as an ORM, but because Hibernate में आपका select and then insert होता है, over that other people have a lot of other people want more control over the queries that are being fired. So people go for Juke as a ORM too. So yes, I've worked on either the two, majorly being used across various companies. But yes, uh, coming back again, JPA, which is Java Persistence API or Jakarta Persistence API, I should rather say, because 17 onwards वो Java से Jakarta बन गया. So a small minor tweak in the package name, I'd say. But yes, JPA simplifies the interaction between Java code and databases by abstracting जो भी आपकी SQL queries हैं. You just have to say find the data between the ranges up, then you specify the parameters. So आपकी query भी easily, whatever you think in English, you can easily go and write there, find me the data between these two dates, easily doable. So majorly these queries complex have been abstracted out by these frameworks, and thus we are able to handle CRUD operations more easily, manage database transaction, reduce the need for manual SQL coding, I'd say. So basic database operations using ORM would involve entity classes, annotating them with the ORM annotations, using framework APIs to perform operations like saving, retrieving, update, deleting the data. So ये सारा का सारा majorly same ही हो जाएगा, but I'd say so. JPA provides a very abstracted layer over आपका Mongo का database आप use कर सकते हो, which is Mongo, which can extend Mongo की repository होती है जो कि आप easily JPA की आपको मिल जाएगी same plugin, Cassandra की आपको मिल जाएगी, MySQL की already widely being used across various framework. So yes, Mm-hmm. that would Okay. be you can say cover up all the database integrations in ORMs. किसी को कोई भी doubt still here, feel free to ping. Okay. So Narendra says MVC और सर्वर साइड जाने के लिए सर्वलेट जानना जरूरी है क्या? बेसिक चीज़ें क्लियर हों, सो यू कैन गो अराउंड सर्वलेट एंड डिग इट अप, नॉट एन इशू. बट जैसे से एडवांस में ज़्यादा होगा, येस, फ्रेशर के लिए आई से सो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट विद एक्सपीरियंस ऑब्वियसली. एंड मोर ओवर जस्ट सर्वलेट नहीं, फिर हाउ दैट सर्वलेट बिहेव्स व्हेन यू गो विद अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क. जैसे बोले तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आपका हर रिक्वेस्ट का पार्ट होता है, बट स्प्रिंग में स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन है, विच इज एग्जैक्टली अराउंड, एज फार एज आई रिमेंबर, वर्जन्स में नंबर ऑफ फिल्टर्स गेट्स इंक्रीज, बट 15 फिल्टर चेन्स हैं जो कि डिपेंड अपॉन यूज केस टू यूज केस आप अपना कस्टम फिल्टर भी उन फिल्टर्स के बीच में इंजेक्ट कर सकते हो. सो येस, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी लर्न थ्रू आउट, बट फ्रेशर्स सब चीज इन डेप्थ में अभी से करना हो, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द बेसिक कोर, एंड देन ओवर द कोर अगर आपका फंडा क्लियर होंगे देन इजीली डुएबल हो जाती हैं चीजें. Okay. I hope Narendra that answers your question. So so we got a good comment from Nishit. So thank you so much for giving best knowledge. एनीथिंग ऑलवेज वेलकम यार, कोई भी डाउट हो पूछो, हम बैठे इसलिए. We got an question. What is Spring application context and how bean is stored? A difference between instance and bean. So many questions in a single one. वो फिर एंड में एड्रेस करते हैं, एक बार पहले सारा हो जाए, बिकॉज इसके लिए आई थिंक सो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है जिसने लिखा है. अभी मेजरली फ्रेशर्स हैं, आई लाइक टू फोकस ऑन दोस, बट या टुवर्ड्स एंड आई विल टेक दैट क्वेश्चन अप, बिकॉज बाकी सब के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा. लेट्स क्रिएट समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन, एंड टुवर्ड्स एंड डेफिनेटली वुड आंसर दोस. Yes, exactly. और So अभी तो मोशंस भी चल रहा है गीक ओलंपिक्स का, सो यस जे यू कैन हाईलाइट मोर ओवर दैट. okay, so I want to share with you the interesting thing which I was mentioning in the beginning. So अभी एक contest चल रहा है Geek Olympics. Let me share my screen and I'll be
briefing you what actually Geek Olympics is. Okay, so just give me a minute. Okay, so basically, I'll be sharing the link of this in the chat box. So this is Geek Olympics. It is an event going on at Geeks for Geeks. It will be starting from July 1st to today is 2nd of July. It has already started. You can register this over here. It will be from July 1st till 31st of July this year. Okay, and you can register over here. I have already registered, so this button is like not saying register. You can register over here, and after registration you have to simply go on this page and you'll be getting all the details. So basically in this event there are many different activities, fun activities to be held over here. Let's say there's a code extreme. If you want to explore, there will be like who are good coders and who like competitive like let's say who likes problem solving, right? Then this section is for you. You can go to the problem of the day, you can try out god of the problems and much more things. So you can explore the events. And over here this is the live stage. This session is the part of this event live stage. So over here industry mentors will be coming and they will be giving you the insights of what tech you should like. Let's say if you are interested in xyz technology, so a session will be there available on the YouTube and you can attend this session, get all of your doubts solved, right? So the details about this session will be provided over here. If you scroll down, see currently it is Java Backend Development live session, right? So the detail is available over here and you can directly attend this session. And each and every day there will be an offer over here. You can observe these offers are currently going on. So you can if you are interested in pursuing a course, then you can definitely check this out, right? And the exciting part is prizes. Okay, so you'll be getting prizes as well. So do register and get the best out of it, right? So that was all about Geek Olympics. If you have any doubt regarding this, then mention in the chat box as well. Okay, so now I would like to hand over to Pranav again. अभी हम बोले तो बेसिकली जावा में डेवलपमेंट कर ली, डेटाबेस कर लिया। अब एक कंट्रोवर्शियल सी चीज़ उठाते हैं। हर कोई कहता है कि देयर इज अ बिग मोनोलिथ एंड लेट्स गो फॉर माइक्रो सर्विसेज। एंड आई होप एवरीवन वुड हैव हर्ड अराउंड Amazon की प्राइम वीडियोस थी, दे वेंट फ्रॉम माइक्रो सर्विसेज अगेन बैक टू मोनोलिथ, एंड देयर कंटेंट रिटेंशन एंड अदर थिंग्स वे, जो भी सारा टीपीएस था, जो भी सारा ट्रैफिक एंड अदर वॉल्यूम दैट दे वर सर्विंग अराउंड, इट इम्प्रूव्ड वाइडली एंड इट रिड्यूस देयर कॉस्ट। सो हर एक चीज़ का प्रो कॉन्स होता है। So I'd say that. So to cover this up, I'd say microservice or monolith, everyone should go with the content of going from a monolith. मेरी जो पर्सनल अप्रोच रही है would be that, and start scaling those things independently, because monolith में you get to know कि सारा method calling है, microservice में वही method को उठा के हम एक different service पे deploy कर दें। That's very much easy language में अगर बताना चाहूँ तो to the community. But yes, if we say so towards more actual thing, so monolith में आपका सारा method routing हो गया, तो आप microservice में जैसे आपका traffic है, आपका user service का traffic ज़्यादा है as a compared to other things being used. अगर एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी अगर आप लेट्स से आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो बैंकिंग की, उसमें हर कोई लॉगिन करेगा। सो लॉगिन का टीपीएस सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आप वहाँ पे गए स्टेटमेंट्स को डाउनलोड कर रहे हो, आप अपनी ट्रांजैक्शंस व्यू कर रहे हो, उसका I'd say traffic would be less as compared to आपका login का. So your login my service needs to scale and very high, उसका पूरा यूज केस भी टोटली डिफरेंट हो जाएगा। बट लेट्स से कि आपका इतना ट्रैफिक ही नहीं है, आपने आपके पोर्टल पे जो लॉगिन किया है वो हार्डली 20 या 30 यूजर्स हैं, या बेसिकली 100-150 है, इजीली हैंडल हो जाएगा। बहुत छोटे इंस्टेंस ऑफ माई सीक्वल से हर चीज आपको एक प्रॉपर एक सर्विस के लिए डिफरेंट यूज केस के लिए आपको करना ही नहीं पड़ेगा, जो कि वो इजीली आपका वहीं से हो जाएगा। सो येस, डिपेंड्स अपॉन यूज केस टू यूज केस। आई ऑलवेज से kind of traffic that you are going for. Initially microservice बहुत cool लगता है, but you have seen industry standard की Amazon Prime video which I quoted कि microservices के कारण issue हो गए। But yes, coming back here again, microservice architecture I'd say is an excellent approach to build applications where each application serve a very small independent area, and they communicate each other over APIs, be it REST or anything, or they can communicate over an event bus, which is basically आपका Kafka आ गया, या ActiveMQ आ गया, या Redis भी देता है as such ActiveMQ की properties, so आप उससे भी callbacks ले सकते हो।
और आपके कॉल बैक्स के लिए गूगल पब सब हो गया. सो देयर आर वेरियस अदर थिंग्स. हर कोई अपने एंटरप्राइज वर्जन में 2-4 चीजें फालतू दे देगा, बट इफ यू टॉक अबाउट ओपन सोर्स, ideally I'd go with Kafka क्योंकि it's highly scalable, open source, you can say distributed event streaming kind of a platform. So I'd always go for Kafka because वो बाकी सारा हम टाइटली कपल नहीं कर रहे. गूगल पे आप सब बोलूंगा तो हम टाइटली कपलिंग विद गूगल इंटरनल टेक्नोलॉजीज. तो अगर मेरे को AWS पे बैचेंस बेटर डील मिल रहा है, कॉस्ट एफिशिएंट मिल रहा है, देन अगेन फिर मेरे लिए दिक्कत आ जाएगी. सो आई ऑब्वियसली गो फॉर ओपन सोर्स रादर देन जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टुवर्ड्स क्लाउड प्रोवाइडर. बट अगर आपको बेटर डील मिल रहा है, विच इज बेसिकली दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव अ बिग डील विद दीज क्लाउड सर्विसेज कंपनीज एंड they are able to bring the cost to a very bare minimum. So that's why they go for those you can say cloud networks, because that's how Google give startups some credits. And AWS also has $1,000, no, $100,000 for a startup. So basically जब आपका वो exhaust हो जाएगा, then you have to pay, else आपके $100,000 तक you need to pay if you are a startup. So yes, depends upon use case to use case. If you want to launch very quickly, you can go for one provider जहाँ पे आपको multiple options मिल रहे हैं. Go with that, launch, test it out. अगर चीजें सही चल रही हैं, then you go and pay. So yes, coming back again, जहाँ पे हम थे initially कि microservices में communication के लिए we go with REST और event based mechanism. But yes, उनको deployment के लिए we go for a container technologies like Docker, or we can go for container orchestration platforms like Kubernetes. So दोनों में से आप कहीं पे भी कर सकते हो, बट बेसिक फंडा आपका क्लियर होना चाहिए कि एक जार बनती है विच इज बेसिकली ओवर विच आपकी सारी सर्विसेज होस्ट हैं, आप उनसे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो. सो I'd say for freshers, get those concepts clear, and for experience, yeah, you can focus depth upon uh, just a way. A quick question would be how to send SMS to a certain user around transactions, and all of them being in sequence. So since I'm seeing transactions user के पास जाने, तो there would obviously banking application के respect में मैंने बोला. So traffic आपका high होगा. You can think around how should you sequence में कैसे वो messages trigger होने चाहिए even though आप parallel कर रहे हो. So a lot questions toward the experience I'd say. So think around it. But yeah, for freshers, need to worry. धीरे धीरे time के साथ सब आ जाएगा यार. Okay. So there is a question from Yes. what is Kafka? Okay. What is So Kafka? I'd say an event bus कह सकते हो. जैसे you want to communicate between, I'm communicating to Jay. My messages are flowing from my system and reaching out to Jay, and Jay is communicating back to me. So we are two, you can say, microservices communicating to each other, and whatsoever I'm saying is making a sync call towards Jay, because अगर मैंने बोला हाँ तो उसको हाँ सुनाई दे, that's a sync call, और उसका वो जवाब देगा तो मैं I'm listening towards it. यार एसिंक की बात करें, विच इज बेसिकली कि अभी मैंने बोल दिया, वो बाद में जब फ्री होगा काम कर लेगा. दैट्स व्हाट काफका डज, सिंपल भाषा में. Okay, so Rasika, I guess your doubt was clear. Okay. अगर टेक्स्ट So बुक चाहिए फिर आई वुड से Apache Kafka is an open source distributed event streaming platform that has revolutionized the way data is processed, managed by pushing the message into the distributed queue. And those there are Kafka consumers which consume those messages from the Kafka brokers and then performs the required steps to be done. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में हो गया, बट या मैंने पहले सिंपल वे में बोला था. okay. Yes. Okay, so I guess regarding the JBDL part was clear from Pranav's side, right? या वो तो पूरा मैंने जो अभी ब्रीफ भी दिया. यू कैन शेयर दैट स्क्रीन अगेन. वो वीक्स में वैसे ही सेशन ब्रेकडाउन है. कैन यू जस्ट शेयर दैट सीन वंस अगेन? Yeah, sure. I guess it's visible. यस, नाउ इट्स विजिबल. पहले तो कॉल बैक बन गया था. सो ऊप्स फंडामेंटल हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया. नीचे स्क्रॉल करना. वीक 3 में स्प्रिंग बूट बेसिक्स, बेसिकली वी टॉक अराउंड दोज kind of niche things which are out of box provided by the frameworks,
which is basically dependency injection, containerization and all जो भी beans हैं, annotations, configurations. नीचे scroll करेंगे, I talked about database technologies. मैंने आपको MySQL, Mongo इन सब के बारे में बोला, इन सब के बारे में बताया भी. यूज केस टू यूज केस स्पेसिफिक होते हैं. अगर बिलियन रिकॉर्ड्स चाहिए, यू गो फॉर कैसेंड्रा. बहुत अलग अलग प्रिंसिपल्स पे अलग अलग चीज़ें काम करती हैं, तो येस यू कैन गो एंड ट्राई दोज आउट अगेन. सो देन वी टॉक्ड अराउंड JPA एंड हाइबरनेट एज एन ORM. आई ऑल्सो डिस्कस अराउंड जूक, जो कि DSL पे बेस्ड है, बट उसमें भी सारी क्वेरीज आपको खुद लिखनी पड़ती हैं. लॉट ऑफ मैनुअल स्टफ डन. बट हाँ, मेवन में यू कैन राइट योर प्लग इन आप, जिससे आप क्वेरीज ऑटो जनरेट कर सकते हो. बट येस, हाइबरनेट आपका वो चीज़ रिड्यूस कर देता है. सो फॉर अ फ्रेशर आइड से गो विद हाइबरनेट, ट्राई टू एक्सप्लोर. फंडे क्लियर हो जाएंगे, देन यू कैन इजीली गो फॉर अदर फ्रेमवर्क्स. को ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. एंड अगेन डिजिटल लाइब्रेरी मेजर प्रोजेक्ट है. देन स्क्रॉलिंग अगेन, रेडिस इन टर्म्स ऑफ कैशिंग इज नथिंग बट अ की वैल्यू पेयर आप जो भी रख रहे हो. एंड दो अलग अलग तरह की हो सकती है. मेम कैश विच इज बेसिकली इन मेमोरी. अगर आप डेटाबेस आप स्टोरेज में परसिस्टेंस करोगे, देन from in memory you can either go for Redis or Aerospike, depending on traffic to traffic. Again back again, हाँ, यूज केस टू यूज केस काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं. स्प्रिंग सिक्योरिटी कोई सर्वलेट का था, उसमें आई पिच दैट इन कि हाँ आपकी 15 फिल्टर चेन्स होती हैं बेसिकली, विच फ्रॉम योर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो भी आपका पास होता है उस पर. हाँ, वो अभी मैं लगाऊंगा उसके पीछे स्टार टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. जावा वर्जन के साथ साथ स्प्रिंग फिल्टर जो आपकी सिक्योरिटी चेन है वो चेंजेस होते जा रहे हैं, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड एडिंग मोर. सो समवेयर डाउन 17 इस समय चल रहा है. वर्जन 17 में अराउंड 18 है स्प्रिंग फिल्टर चेन. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बिकॉज मेरे को एक बार फिर से सोर्स कोड में जाना पड़ेगा. बट या, दैट इज ओवर द टाइम पीरियड चीज़ें मोर रिफाइंड वे में आ जाती हैं. Kafka, I give you an example. You can go around, read around those messaging queues, uh, and why do we prefer things to be done over Kafka but not over REST APIs? That also important. And when do we prefer making calls over REST rather than using Kafka? दोनों के प्रो कॉन्स होते हैं. वो चीज़ें वो इस ऑलरेडी कोर्स में सारा डिस्कस होगा. एंड येस, इंडस्ट्री वाइड स्टैंडर्ड एक ई-वॉलेट सिस्टम है जो कि दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड लाइक पेटीएम. यू कैन easily go and build up those. So that's all the features are included in the Java backend platform. So yes, this is all So, around the course that is being offered by Geeks for Geeks. Feel free to pitch in if you have any doubts or anything you would like to ask more in depth. But yes, okay. So one more thing I would like to share with everyone, as we have already as we are on this page. So currently there is a sale going on. So basically you can check out the sale up to, there will be like 30%, up to 30% will be getting the benefit on the courses available. Okay, so it's the best time to pursue any course if you are looking forward to upskill yourself. Like let's say currently if you might have like got motivation to start with and pursue your career in JBDL, right, Java Backend Development, then you can also go through the course and you can explore it, right? So it is going to be the best time for everyone. Yeah, so that was it regarding the course and the current sale which is going on. Any doubt, anyone from the audience you want to ask any doubt? So basically now we'll be tackling all of your questions regarding the Java backend development. I got one like interesting doubt, so let me just get it. So yeah, how can you start with Java backend? Someone was asking like what was your journey towards the Java backend development part, like what can be the journey? journey. What can be the journey? Hmm. I'd say so. Journey comes up with the experience. And जितने better systems पे आप काम करो, which is basically जितने आप better traffic को handle कर सको, that would be a journey. Go out on the YouTube and search like Hotstar का जब वो ट्रैफिक होता था, जब क्रिकेट पे जब हमारा हाईएस्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के जब क्रोर्स ऑफ व्यूज आए थे, उसमें उनको वो दिक्कत नहीं थी कि एवरीवन इज वाचिंग टुगेदर. बट जैसे ही मैच खत्म होने के बाद वो होम पेज पे आते थे ना, उनपे उनको सबसे ज्यादा फॉल आउट होने लगा था. तो दैट्स हाउ, मतलब व्हेन यू हैंडल लॉट ऑफ ट्रैफिक, तब नई प्रॉब्लम अराइज होती है एंड यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर इट. सो दैट्स वेयर यू गेट द लर्निंग कर्व. अगर आप सेम चीजें सेम बार बार करते रहोगे, उसमें योर लर्निंग कर्व वोंट बी देयर. बट यस, things come with I'd say so experience. Everything takes time and patience. That is very true. You have to be consistent.
open up for learning and experimentation. These are the few things I can say. But still, Okay. कोई भी doubt हो ping करो. I hope I was able to answer you. Yeah. So like I okay, so there is a question, sir. Can we enter how to crack Java interview for a fresher? Being a fresher. फ्रेशर पे मेजरली हम फर्स्ट राउंड डीएसए पे रखते हैं जहाँ तक होता है एंड देन you can easily go in for better things, I'd say. So बाद में हम in depth around 2 or more than, I'd say, so 3-4 years पे हम आते हैं low level और high level design पे. Fresher पे go towards getting your DSA covered, identifying the OOPS principle basically जो भी class वगैरह आपसे लिखी जाए. These would be it. बाकी nowadays I've seen people preferring projects. So yes, if you go to startup, they have started now to look on the project that you are doing. So yes, start focusing on projects if you think so. DSA अगर algorithm नहीं पूछा या CP नहीं पूछा जाए, which is basically competitive programming, again then आपके projects के ऊपर focus किया जाएगा. So either or would be the kind of thing. ओके. सो लाइक एक और भी होता है कि फ्रेशर्स मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं कि इफ दे आर selecting Java as their primary language, and they have two options, right? Either explore the backend development side of Java, or either focus their entire time on learning DS and focusing on DSA questions. So what will be you suggesting to them, like either they should explore the backend development side of Java, or they should focus on DSA, or they should go parallelly? I'd say mix of both would be the best answer, because DS and other things आप दिन के 3 questions करो, consistent रहो. अपने क्वेश्चंस करो, देन ऑलवेज अपने आंसर से कभी सेटिस्फाई मत होना. गो इन द कमेंट सेशन, थिंक एंड रीड अराउंड इफ देयर इज अ बेटर सोल्यूशन व्हिच इज देयर, एन ऑप्टिमल सोल्यूशन. जस्ट ऑलवेज गिविंग अ ब्रूट फोर्स डज नॉट वर्क. यू गो फॉर गूगल इंटरव्यू, दे गिव यू 60 minutes, उसमें आपको सब चीज़ करना है, आपका प्रोडक्शन लेवल रेडी होना चाहिए. अदर मिस्टेक्स हुई तो देन उस पर डिस्कशंस हो रहा है, उस पर टाइम वेस्ट हो रहा है, सामने वाला इतना वोंट बी दैट मच हैप्पी टू टेक यू इन फॉर हिज टीम. सो दैट ऑल्सो मैटर्स. But if you say so for other things up, but yeah, 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करो, not in major use. आपका 3 महीने 4 महीने लगेंगे, you would be able to cover up majorly everything. And in terms parallelly, आप half an hour an hour maximum दे दो for backend development. Easily you would be able to grasp a project. इसमें जैसे the kind of, I'd say, Geeks for Geeks का वो है syllabus, that's entirely on 8 or 9 weeks, and everything is on weekend, which is a 3 hour kind of a lecture. जिसमें आपके डाउट सॉल्विंग एंड अदर थिंग्स आप यू कैन इजीली, आई हैव फाउंड mentors as well as teaching assistants very smooth down there. So feel free to reach them, ask your doubts, and majorly सारा उसी टाइम पे कवर अप हो जाता है. there is nothing you have to find it more effort मारना पड़ रहा है पूरे हफ्ते में, ऐसा कुछ ज़्यादा खास है नहीं. So I'd say so mix of both would be the kind of better thing to do. Yes, exactly. So nowadays, like any of the company, they are also not. They are also willing that if they are hiring a fresher, they want some projects from there, and the scenario is. हाँ, अभी मैंने बोला कि स्टार्टअप के मार्केट में इफ यू गो फॉर अ सीनियर आल्सो, much more emphasis given towards CP. This is basically competitive programming, but हाँ, core knowledge over how the things work, Java, आप कैसे objects बना रहे हो, much more with the experiences being focused into Java backend development. So yes, nowadays even when startups recruit, they do think कि CP is lagging behind somewhere down the line. They much more prefer a experienced candidate, so उस हिसाब से they go for जावा बैकएंड, या फिर बैकएंड में क्या क्या टेक्नोलॉजीज पे काम किया, क्या प्रोजेक्ट्स किए एंड ऑल, उस पर फिर फोकस हो जाता है. Okay. So we got one more question from Shreyas. He's saying that full stack developer or data analyst, which domain is good to choose? जिसमें मजा है. अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर में मजा आ रहा है, आप नो डाउट उतना हाई पेइंग पे ले जाओगे. आई हैव सीन पीपल अर्निंग मोर देन 1 CR प्लस ओनली बीइंग अ फुल स्टैक डेवलपर. आई हैव आल्सो सीन डेटा एनालिस्ट, जो कि इंडिया में काफ़ी हैं, मेरे फ्यू फ्रेंड्स हैं हु आर अर्निंग इन द सेम विद अ सिमिलर काइंड ऑफ अ रेंज. जहाँ पे खुश हो, जो चीज़ कर रहे हो, आइदर और शुड वर्क. ये नहीं चीज़ बोलूँगा कि हाँ फुल स्टैक इज बेटर देन डेटा एनालिस्ट. दैट डिपेंड्स, आपको जो चीज़ में मजा आ रहा है, डू दैट. Yes, exactly. If you are like learning, or if you are enjoying your thing, like whichever technology you are focusing on, then you should focus on it more compared to the other part. Yeah.
खुद का मन करेगा फिर उस चीज़ में डेप्थ में जाने का। अब खामखा में कोई बंदा बोल दे फुल स्टैक डेवलपर, आपको कुछ पल्ले पड़ना Hmm. और सारा बाउंस जाए, कुछ नहीं चमके तो कैसे होगा? Uh, Exactly. Another things I'd say, so if anyone is forcing you, just this is the correct option, this is the correct path, obviously you can challenge them and go with a different thing. So yes, wherever you feel fine with drawing a thin line, you should do. So I guess we don't have any more doubts to be tackled. Anyone from the audience, do you have any other doubts? Okay, so currently, yeah, full stack developer. So I guess we already, sir, can web development help in interview? Dun, 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 dun. Sir, can web development hand in interview? If you have any knowledge around web development, anything is appreciated. आपके interview में we do ask for what all the projects that you have worked on, and उसी के ही we identify the kind of problem that the person has solved, and उसी problem के around we discuss around what are the possible other things that the other person could have tried, what's the knowledge around the project that he have developed. So yes, anything if he asked for a uh, profile and other things around, so yeah, depends upon the project आपने जो किया. Okay, so there's a request from audience if you can share your LinkedIn profile. Yeah, I'll share that. Just give me a second. मुझे खुद लॉग इन करना पड़ेगा, ऐसे तो याद नहीं. So I am sharing. I have to connect to YouTube. You can share. Jay would share those things. Okay, yeah, So I'll share it. and अगर कोई भी डाउट है, I'll leave now. कोई भी डाउट है, feel free to reach me out over that LinkedIn, ping me in the message or so. Whenever I get time, I'd answer any of the doubts that you have. Moreover, you can also reach out to Jay just in case आपको other queries हो. Feel free to reach. So with everyone's sweet time, I'd probably leave. Uh, Thank you, Pranay. it was Thank you nice for communicating with everyone and sharing the kind of industry knowledge, but yes, it was worthwhile. Chalo, thank bye you, Pranav. bye. Bye bye. Okay, so we are at the end of the session. Again, I would like to those of you who have joined after like few minutes, so I'd like to share the details about the Geek Olympics. Okay, so I'll be quickly wrapping up the session. Okay, thank you, Amarnath, if you enjoyed this session. So I'll be quickly giving you the brief about Geek Olympics, and then we'll be ending this session. So here is the Geek Olympics. It is the best time if you are like willing to be consistent into coding for at least a month, then you can register over here and with fun activities, right? Because maintaining consistency is very difficult. I also agree with you guys. So basically, if you want to be consistent and if you want to be consistent in an interesting way, then explore each and every event. You can also watch the live stage, which will be basically a live session with the industry mentor, right? And if you are willing to pursue any course, then this is the best time for you guys to get it at a like very efficient price. Okay, so and there will be some prizes also, right? Let's say you'll be getting this many prizes. So basically this is an interesting way for you guys to be like consistent into coding, and while having fun you are learning something. Because if you constantly focus on learning not in an interesting way, then it will be very much boring and you yourself will not like doing that task again and again, right? Okay, so I would like to thank everyone for joining this session. Okay, so basically I guess the idea about what backend development in Java looks like is clear to everyone, right? So how to start and everything was informed by Pranav sir himself. Okay, even though if you have any doubt, then do mention them in the comment section below, and we'll be reaching out to you, we'll be replying the doubts. Okay, so any doubts from your end regarding any of the part? And today it was such an amazing session with you guys. It was very much interactive. So basically whenever you attend a session, if you be interactive, and then the host and the other person who is delivering the session also enjoys himself. So today it was really a great session. We had a great audience.
Thank you everyone, thank you for joining this session. Okay. Okay, so I guess no one has any further doubt. So we'll be ending the session here only. Okay, so do check out the Geek Olympics and also do check out the Java Backend Development course if you are willing to, if you are looking forward to make some career in Java Backend Development, right? So that was it from my end. Thank you everyone. Thank you for joining. And tomorrow also there will be an interesting session. You can do check it out on the YouTube. The link will be present over here, so you can attend the upcoming sessions as well. Okay, if any queries, we will ping you. Okay, okay, sure. You can ping me as well. Okay, then study. Okay. If core Java knowledge, then study. Okay, so that was it for today's session. Thank you, everyone. Do like this video and share it with your friends if they are also looking for such an amazing content. And also do subscribe to this channel if you want to watch such an amazing videos. Thank you, everyone. Thank you. Bye bye.